हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 9 का विकास का जो सेकंड टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले इंग्लिश सब्जेक्ट सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 6 में यूनिट 6, 7, 8 के क्वेश्चन आंसर्स की। इसके पहले मैंने ऑलरेडी इंग्लिश का बहुत सारे वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। इंग्लिश सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 6, poem 6. How does the poet suggested that all people on the earth are the same? The poet suggested that all people on the earth are the same as by the breath, क्योंकि वो सेम जैसी एयर लेते हैं, और बरीड एक जैसा ही जलते हैं, वैक करते हैं, वॉकअप करते हैं, स्लीप लेते हैं, हैट, लव एंड एक्सेट्रा वर्क भी करते हैं, लेबर्स। द इम्पोर्टेंस ऑफ द सन एयर, जो इम्पोर्टेंस है सन एयर एंड वाटर इज इक्वल फॉर एवरीवन, सबके लिए सेम मिलता है। तो एवरीवन नीड अ पीस, इसलिए सबको क्या रखनी चाहिए, शांति रखनी चाहिए, एंड सफर करना चाहिए फ्रॉम स्टारवेशन एंड ड्यूरिंग द वॉर टाइम पे। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम नो मैन आर फॉरेन? द पोएम इज ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग प्ले फॉर द यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं। It underlines that fact that the people of the different countries have the same physical, mental, and emotional experience. Their fate is the same, and they are in no way different, even though they wear the different clothes and they speak the different languages. But nobody should be viewed as stranger, and no country foreign. The poet emphasized that futility of hating those who belong to other country. वो सिर्फ इंसानों को हेट नहीं करते, वो एक कंट्री दूसरे कंट्री को हेट करते हैं। एंड व्हेन वी वेज वॉर अगेंस्ट हो जाते हैं तो वो भी एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। एंड वी आर ओनली डिफाइल आवर ओन अर्थ, द डस्ट। उसकी वजह से क्या होगा, अगर वॉर होगा तो डस्ट एंड द स्मोक कोज होगा, वॉर वेपन की वजह से पॉल्यूट होगा, एंड वेरी एयर और ब्रीथ जो ले पाते प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाएगी, क्लियर। एंड दस वी शुड नेवर फाइट विथ वॉर्स, इसलिए फाइट नहीं करना चाहिए। एंड वी शुड रिमेंबर दैट ऑल ऑफ अस आर द चिल्ड्रन ऑफ द सेम गॉड, एक ही गॉड के सारे चिल्ड्रन से। एंड व्हेन देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस, उन्होंने अपने बीच में कोई डिफरेंस नहीं रखा बिटवीन अस एंड देम। एंड वेयर इज द रूम फॉर हेट्रेड, वायलेंस एंड वॉर, तो क्यों अपने इन सब के लिए वायलेंस करें, हेटेड करें और वॉर करें, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. What message does the poet want to give through the poem? Why? The poet conveyed deep messages from the poem. No men are foreign. No men are foreign. He conveys the message of the universal brotherhood की बात कर रहे हैं. He explained that no men are foreign and strange. All are like, सब एक दूसरे को like करते हैं. All the sons of the same as the God. The poet states that just like humans, even animals want to freedom. Therefore, they should not be caged. उनको भी केज में नहीं रख सकते. And the story of teaches the student about the concept of brotherhood, unity, and patriotism. Right? Okay. The next poem, poem 7. How has the trees grown to its the full size? Describe the process mentioned in the poem. The trees grows to its the full size by absorbing the years of sunlight, water and air. तीनों का वो क्या करते हैं, यूज करते जाते हैं. इट स्लोली ग्रो होते हैं आउट ऑफ द अर्थ, अर्थ के बाहर आते हैं, उसके स्प्राउट निकलते हैं और उसके बाद लीव्स ग्रोथ होता है और धीरे धीरे वो बड़े होते जाते हैं, प्लांट्स. द वर्ड सजेस्टिव ऑफ इट्स, वर्ड्स क्या बता रहे हैं, द वर्ड सजेस्टिव ऑफ इट्स life and activities are grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and sprouting of leaves. Done. Okay, the next questions. Question number 2.
How is the tree finally killed? Describe the complete process. The speaker state the properly cutting or killing a tree is not easy. Easy नहीं है and cannot be killed merely by the jabbling knife से and cutting its stem or branches as it will heal and regrow मतलब वो खुद में खुद ही अपने आप ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है अगेन. He says that a tree is strong हो जाता है enough overcome this below blow as the nature's न्यूटर्स उसको मिलते हैं इनटू द अर्थ में से नेचुरल्स मिलते हैं एंड द सर्वल ईयर्स वो कंजप्शन करता है लाइक एयर वाटर एंड लाइट्स एंड प्रोवाइड बाय नेचर्स में से. एंड दस द स्पीकर ऑल्सो से दैट ट्री कुड फाइनली तभी किल होता है ओनली बाय अपरूटिंग जब उसको रूट के साथ उसको निकाल दो इट फ्रॉम द रूट्स and by pulling them out of the ground and exposed in the sun and air. This would lead to its the weathering and twisting and that would eventually kill the tree. इस तरह वो ट्री क्या हो सकता है आपका किल हो सकता है. Okay, the next poem, next question. Does the poets like the idea of killing tree? Why or why not? The poet does not like idea of the killing a tree. The poems ये बताना चाहता हूँ किलिंग ऑफ ट्री बाय द गिविन पटेल. डिस्क्राइब किया द प्रोसेस ऑफ किलिंग अ ट्री इज अ ग्रेट डिटेल्स है. हाईलाइटिंग द डिफिकल्टी आती है वायलेंस होता है इन्वॉल्व होता है इसके अंदर. द पोएट एम्फेसाइज दैट इट टेक्स मच मोर देन अ सिंपल कट लगाओ टू अ किल अ ट्री एंड दैट द प्रोसेस इज लॉन्ग एंड पेनफुल. And this suggested that the poet does not condemn the killing of tree. Right? Next question. How does the poet react to his loved ones that write a brief note in the feelings? The death of the poet beloved is a sudden and unexpected था उसके लिए. That is mind से उसका वहाँ से निकलना as well as the body पे से seem to be बहुत एक दूसरे के close थे. A deep slumber has taken hold over him. His spirit seems to be a sail. He has lost touch of earthly and consciousness. Her death, उसकी जो डेथ है कट ऑफ उसको पूरा कट कर दिया फ्रॉम द अर्थली फियर से. A deep slumber has engulfed all his worldly feelings. Right? Next questions. Give the central idea of the poem. In the poem A Slumber Did My Spirit a Sail, the poet tells us that one whom we love very much, अगर आप किसी का बहुत अच्छा लव करते हो, right, when leaves us our life come to be stand still from the some period के लिए of time, खड़ी रह जाती है आपकी लाइफ खड़े वहीं पे रुक जाती है. बट इट undeniably true that anything can happen with anybody. In the poem the poet बिलोव करते was a young and beautiful woman की बात कर रहे हैं. Once she was and vigor, but now she is trapped beneath the surface of the earth and revolve along with it. Thus the poet gives a central message of the life. यही मैसेज बता रहे हैं. Next, where does the poet imagine this loved one to be and which lines the poem in tells us? The poet imagination does not allow him to think of his dead loved one as a person living in a very happy states or in a heaven. Rather, he imagines her to be a part of nature ka and being buried under the earth. She rotates with the stones, rocks and trees. The lines in the poem which show these are the follow. Rolled around the earth diurnal course with the rocks and the stones and the tree. ये लाइन में दिया गया है. ओके क्लियर. सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है. वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना.